Good morning, students. Welcome to the online class of School of Open Learning. Myself, Guneet Kaur, and I'll be taking your financial accounting. This is the second class of financial accounting. So let's start with the session. And one thing जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, and that will follow for all the classes that last 10 to 15 minutes, like from 10:20 to 10:30, last 10 minutes, or 10:15 to 10:30, last 10 to 15 minutes of this session will be for your queries and doubts. आपको जो भी doubts आते हैं, जो भी topic आप मुझे चाहते हो मैं repeat करूं, और कोई भी आपको queries है that you can post in the live Q&A section, जहाँ पर आप post कर सकते हो अपने doubts. So last 10 to 15 minutes will be for your doubts. So let's start the today's session. In the previous class, in the last class, हमने start करा था introduction of financial accounting. We talked about कि financial accounting होती क्या है, what are the purpose of financial accounting, what are the branches of financial accounting, and we started the two concepts of financial. We did the some concepts and accounting principles of financial accounting. We covered 9 to 10 accounting concepts and accounting assumptions that we talked about in last class. So a quick brief आपको मैं last class का दे दूं before starting with the today's session. So students, as you can see on the screen, in the last class we started with the basics. हमने पढ़ा कि accounting क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, व्हाट इज अकाउंटेंसी. सो क्विकली आपको गो थ्रू कराऊं तो अकाउंटिंग क्या होती है. It is concerned with identifying the financial transactions, recording the financial transaction, classifying them, and summarizing and interpreting and communicating the results to the internal and external users is accounting. So accounting starts with identifying the financial transactions. हमारी जो accounting है वो start ही होती है जब हम identify करते हैं हमारी financial transactions, फिर हम उनको record करते हैं. Recording कैसे होती है? By पासिंग जर्नल एंट्री. जब हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग हो गई. देन इज क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग इज समराइजिंग, क्लासिफाइंग द अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज समराइजिंग. समराइजिंग इज preparation of trial balance, preparation of trading account, preparation of P&L account, and preparation of balance sheet. So when we have summarized our accounts, then we interpret and communicate the results. जब हमने P&L statement, balance sheet prepare कर ली है, we know about the position statement of the firm, we know about the profitability of the firm. सो जब हमें कंपनी के एसेट्स, कंपनी के लाइबिलिटीज के बारे में नॉलेज है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं टू आवर यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स. सो देन वी टॉक्ड अबाउट बुक कीपिंग. हमें पता है दैट बुक कीपिंग इज ओनली टू प्रोसेस आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ financial transactions. So जब हमने identify करी financial transactions and then we did the recording, so that is known as bookkeeping. After that, we talked about accountancy, which is a systematic knowledge of accounting. So accounting is a practical process. जब हमने जो भी हमारी नॉलेज जो हमने अकाउंटेंसी में गेन करी है उसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग. एंड ओनली नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटेंसी. तो देन इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस करा था अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. We also talked about the accounting process. जो मैंने आपको बताया अभी, that accounting process जो होता है वो कैसे start होता है. Number 1 step is identification of financial transaction.
हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, कौन सी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं. देन वी डू द रिकॉर्डिंग, then we do this classifying, then we summarize, and the last step is analysis and interpretation and communication of result to the users. So we also talked about the purpose of accounting, कि हम accounting करते क्यों हैं? Because accounting helps us in taking useful decisions. It helps the management. Accounting से हमारे को क्या benefits है, that हमें हर चीज memory में record नहीं रखनी होती. We have our documents, we have everything documented. तो हमें सब कुछ अपने दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है. We don't have to remember everything. जब हम accounting करते हैं तो हमारे पास सब कुछ एक written है. We have everything very documented. System of accounting, double entry system and single entry system. We talked about that we follow the double entry system. Accounting may we follow double entry system, which means that every transaction has dual aspect. So ये बात आप familiar हो कि जब भी हम journal entry करते हैं, so there is always an equal amount of debit and credit. सो दैट इज डबल एंट्री सिस्टम. अगर आप कोई अमाउंट कोई भी अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो सेम अमाउंट से एक क्रेडिट की भी एंट्री होगी. Basis of accounting. So there are two bases of accounting: cash base of accounting and the accrual base of accounting. We follow the accrual base. Then we talked about the capital expenditure, revenue expenditure, capital receipts, revenue receipts, deferred revenue expenditure. So after that we started, हमने start करे थे accounting concepts, जिसमें we have three major assumptions: going concern assumption. Going concern assumption says कि हम assume करते हैं that our business shall continue for a long period of time. So जब भी हम business करते हैं तो according to the going concern assumption हम assume करते हैं that our business shall continue for a long period of time, and हमारी कोई भी intention नहीं है कि हम अपने business को shut down करेंगे, close करेंगे. Next is consistency assumption. Consistency assumption says कि अगर आप कोई भी एक method follow कर रहे हो, for example, आप decide करते हो that in 2021 you are going to charge depreciation on straight line method. So आपने इस year के लिए straight SLM method depreciation का रखा for charging it. Now, according to the consistency assumption, आप यही सेम मेथड अपने सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी फॉलो करोगे. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट आप फर्स्ट ईयर लाइक 2021 में आप एसएलएम यूज कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट ईयर आप स्विच करके रिटन डाउन वैल्यू कर रहे हो, देन अगेन यू आर चेंजिंग. सो दैट इज नॉट एन आइडियल प्रैक्टिस, बिकॉज अगर आप अपने मेथड्स में कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू compare the results of different period. आप comparison नहीं कर पाओगे कि हमारे profit में कितना change आया, because हर साल आपका different approach रहा. So we should always follow one approach according to the consistency assumption. Next assumption, third assumption was accrual assumption. So हमारी accrual assumption कहती है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तभी करना है जब वो ट्रांजैक्शन एंटर्ड हुई, and not when the settlement takes place. So transaction is recorded when it is entered and not when the settlement takes place. So हमारी accrual assumption कहती है जैसे आपने credit sale करी on today, like today is 13th January, आपने credit sale करी 50,000 की. क्रेडिट सेल है तो इट मींस आपने आपके गुड्स चले गए, सोल्ड आउट, बट क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो आपको जो अमाउंट रिसीव होना है वो नेक्स्ट मंथ होगा, बिकॉज क्रेडिट सेल है. कैश सेल होता तो इमीडिएट आता, बट सिंस इट्स अ क्रेडिट सेल, सो आपको जो अमाउंट है वो
probably say next month receive होगा. So according to the accrual assumption, हम ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो एंटर हुई. लाइक 13 जनवरी को आपने क्रेडिट सेल करी तो आप अपने बुक्स में सेल शो करोगे, राइट, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस. आप वेट नहीं करोगे कि जब तक आपको पैसे रिसीव होंगे आप तब इसको सेल शो करोगे, ऐसे नहीं. सेटलमेंट जब होगी तब होगी. आपने जब ट्रांजैक्शन करी है, सपोजिटली आज करी है, नो मैटर वो क्रेडिट है या कैश, ऑब्वियसली कैश है तो आप इमीडिएट करोगे. अगर क्रेडिट है तो भी देन ऑल्सो आप इमीडिएट रिकॉर्डिंग करोगे, बिकॉज अक्रूअल असम्पशन कहती है कि आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है व्हेन इट इज एंटर्ड, राइट. So these are the three major assumptions. So next, continue. After the assumptions, we started with the accounting principle. So there are close to 10 to 11 very important accounting principles जो हमने last class में start करा था, like business entity principle. So business entity principle says that जो हमारा business है, it is separate from its owners. So accounting entity principle or business entity principle says कि business is always separate from the owner. business के लिए जो owners हैं वो हमेशा creditors रहेंगे. ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. जो बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस के एसेट्स हैं, वो बिजनेस के हैं, और जो बिजनेस के ओनर हैं उनकी अपनी डिफरेंट ऑब्लिगेशंस है, अपनी लाइबिलिटीज हैं. Business entity principle says that business is considered separate from its owner. Next principle that we studied was money measurement principle. So money measurement principle says that हमेशा we record the transactions in terms of money. Money measurement principle says only monetary transactions are recorded in the books of account. वो ही transactions को हम record करेंगे जिसमें monetary money involved है. You have invited your friend for a meeting. You have a business meeting. एक एग्जाम्पल है, आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट करा टू अटेंड अ मीटिंग. सो आप बताओ, इज इट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? अपने फ्रेंड को इनवाइट करना मीटिंग अटेंड करने के लिए, सपोज इट्स अ बिजनेस मीटिंग, सो इट्स नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिकॉज कोई भी मनी आप देखोगे कोई भी मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं है, कोई भी मॉनेटरी चीज रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है. सो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सेज सिर्फ ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, वो ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. Third principle is accounting period principle. So it says that life of enterprise is broken into smaller periods. So accounting period principle हमारा कहता है कि जो enterprise की life है वो small periods में broken है, so that its performance can be measured at regular intervals. So accounting period principle says जो भी life है एक enterprise की वो small parts में broken है. For example, हमारी जो बिजनेस है, इससे हमारा बिजनेस 10 इयर्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एवरी ईयर एक पीरियड, वन ईयर का अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर करके हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. एवरी ईयर हम फाइनेंशियल्स बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो इफ रिक्वायर्ड. So accounting period principle says life of enterprise is broken down into smaller periods for comparing the performance. Full disclosure principle. So this principle says full disclosure principle that all the important information should be disclosed fully. Complete and understandable reporting of the financial statement of all significant information. So full disclosure principle says कि हमें completely हमारे financials में जितनी भी important information है उसको disclose करना है, कुछ भी hidden नहीं होना चाहिए. Next is materiality principle.
So this principle says that only material item should be disclosed. अब स्टूडेंट्स मटेरियल आइटम क्या होता है, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस. मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट आइटम्स, सो डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के लिए कोई आइटम मटेरियल हो सकती है, सिग्निफिकेंट हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो आइटम किसी और बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती. सो मटेरियलिटी डिपेंड्स. Next is prudence and conservatism principle. So it's a very important principle. Conservatism, इसको हम एक और वर्ड भी बोलते हैं prudence principle. So it says do not anticipate a profit but provide for all possible losses. स्टूडेंट्स कभी भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना, बट लॉसेस के बारे में हमेशा सोच कर चलना है. अगर आपको प्रॉफिट होना है 2 मंथ्स बाद, आप एक्सपेक्ट करते हो दैट योर बिजनेस विल अर्न 1 लाख रुपीज, सो नेवर नेवर प्लान योर एक्सपेंसेस. कभी भी अपने प्रॉफिट को एंटिसिपेट करके मत चलो कि मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ये फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, एक अनसर्टेनिटी तो रहेगी बिकॉज बिजनेस है. बट हमेशा अपने माइंड में सोच के चलना दैट अगर वो प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको लॉसेस हुए, सो देन व्हाट इज द बैकअप, राइट? सो प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल डन. देन इज next is historical cost principle. So historical cost principle says हम अपनी बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड करेंगे at the price paid to acquire it. हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल सेज आपने जो भी प्राइस पे करा है एसेट को एक्वायर करते टाइम, फॉर एग्जांपल 5 years पहले आपने एक मशीनरी परचेज करी 10 लाख रुपीज की. सो अपनी बुक्स में आप हमेशा उसको 10 लाख पर ही अपना एसेट शो करोगे, बिकॉज जिस प्राइस पे आपने उसको एक्वायर करा, राइट, मार्केट वैल्यू पर नहीं. एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट. Next principle is matching principle. So revenue of the accounting period should match with the expenses to determine the correct profit or loss. So students, matching principle says, so revenue जो भी है अकाउंटिंग पीरियड का, वो मैच करेगा ऑलवेज विद द एक्सपेंसेस. सो अगर आपका इस साल की सेल थी, से फॉर एग्जांपल इस ईयर की सेल आपकी 10 लाख रुपीज थी, सो उस 10 लाख रुपीज के जो रेवेन्यू है उसको अब आपको मैच करना है विद द एक्सपेंसेस टू जनरेट 1 लाख रुपीज. आपके कितने एक्सपेंसेस हुए, तो वो सारे एक्सपेंसेस आप मैच करोगे, शो करोगे in the in the P&L account or in the financial statement. Next is duality principle. It's similar to the double entry aspect, dual aspect of accounting, that for every debit there is a credit of equal amount. So जो हमारा duality principle है वो कहता है कि जब भी कोई अमाउंट का डेबिट होगा, so equal अमाउंट का एक क्रेडिट आइटम भी होगी, बिकॉज हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं. Last principle is revenue recognition concept, which says, which is similar as the accrual assumption. जो हमारा revenue recognition concept है वो सेम है जो हमारा accrual assumption है, कि जो revenue है उसको हम recognize करेंगे जब हमारी transactions enter हुई, and not when the settlement take place, right? रेवेन्यू, अगर क्रेडिट सेल कर रहे हो आप, से 13 जनवरी को आपने क्रेडिट सेल करी, तो आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे ऑन दिस डेट ओनली. आप अपनी बुक्स में लिखोगे कि 13 जनवरी को ही सेल हुई और आपके पास इतना रेवेन्यू आया. नो मैटर आपकी सेटलमेंट, आपको पैसे चाहे 1 महीने बाद मिल रहे हैं, बट आप अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आप अपने बुक्स में अपना फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू जो है वो आप ना रिकॉर्ड कर लोगे, राइट स्टूडेंट्स? सो बेसिकली इन द लास्ट क्लास हमने मेजर ये पॉइंट्स कवर अप करे थे. सो आई एम स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक which is also a theory topic but a very important topics. So I'm starting
with the accounting standard concept कि accounting standards क्या होते हैं. Then I will switch to the IFRS topic. So आज की क्लास में हमारे जो भी remaining topics रह गए थे previous class के, that we will do right now. And the book that you have to refer is J.R. Monga, Basic of Financial Accounting. I have mentioned the name of the book in the Q&A section. So let's start with another new topic, which is accounting standard. So I hope screen is visible to all. So meaning of accounting standards. Students, accounting standards होते क्या है? They are defined as codified or written statements or documents of accounting rules and guidelines or practices for preparing the uniform and consistent financial statement. So students, जो हमारे base होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं अकाउंटिंग के, उनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जिनके बेस पर, जिनके बिहाफ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारी गाइडलाइंस हैं, हमारे फंडामेंटल्स हैं, जिनके बेस पर वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो वी कैन से दैट accounting standards are guidelines which tells us how to prepare financial statements. So I hope this is clear. Accounting standards क्या है? हमारे fundamentals हैं, हमारे guidelines हैं, on the basis of which we prepare our financial statements. This is very important. So students, we have different accounting standards. So आपके लिए ये बहुत important है. I'm highlighting the important accounting standards जो आप लोग try करना to remember. Accounting standard 1 जो है हमारा, वो क्या है? Disclosure of accounting policies. So AS1 is disclosure of accounting policies. Accounting standard 2 क्या है हमारा? Valuation of inventories. Accounting standard 3 belongs to cash flow statements. Then accounting standard 4 is contingency and events occurring after the balance sheet date. Then we have accounting standard 10. I'm going directly to the AS10 because this you are going to study in chapter depreciation AS10. We have a chapter on AS2 also, valuation of inventories. So these are the major important accounting standards, and I want you guys to remember some of the accounting standards for your knowledge. So I hope students आपको accounting standards समझ आया, that accounting standards हमारी guidelines है, हमारे fundamentals हैं, जिनके base पर हम अपने financial statements को prepare करते हैं. Next is IFRS, International Financial Reporting Standards, जिनको हम students Ind AS भी बोलते हैं, International Financial Reporting Standard. So what is IFRS? International Financial Reporting Standards are the globally accepted accounting standards adopted by the ISAB, International Accounting Standard Board, International Accounting Standards Committee. So students, basically एक history है कि evolution कहाँ से हुई IFRS की, but the point that you need to remember is कि ये हमारे globally accepted accounting standards है. आज के time IFRS is followed by a lot of countries. So IFRS हमारे globally accepted accounting standards है. So IFRS is a set of accounting standards, series of pronouncements, opinions issued by International Accounting Standard Board, explaining how different types of business transaction and events should be reported in financial statements. It also includes guidelines and interpretations approved by IASB,
the main goal of IFRS is to permit international comparison possible. So basically students, ये जो IFRS है, जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये इंटरनेशनली फॉलो होते हैं. एंड सिंस सारी कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज इसको फॉलो करती है, सो ये इसका बेनिफिट ये है कि इट्स इजी टू मेक कंपैरिजन. अगर अब आप यूएस में फॉर एग्जांपल आईएफआरएस फॉलो होता है, एंड अगर वो इंडिया में भी वी आर डूइंग आईएफआरएस, तो इट्स वेरी इजी टू कंपेयर द रिजल्ट्स, बिकॉज दोनों के फाइनेंशियल्स जो बने हैं वो सेम गाइडलाइंस पर बने हैं. सो देन इट्स वेरी इजी टू डू कंपैरिजन. आप इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यूएस की कोई कंपनी है और इंडिया की कोई कंपनी है, दे दीज बोथ कंपनीज wants to enter into a joint venture. तो वो दोनों कंपनीज को एक न्यू बिजनेस सेटअप करना है. दे वांट टू एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर. सो फॉर डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन टुगेदर, अगर वो दोनों कंपनी साथ में काम करना चाहती है तो डेफिनेटली एक दूसरे के फाइनेंशियल्स चेक करेगी. Now in India, we are following, say, for example, different accounting standard, and in US they are following IFRS. So now it's very difficult for the chartered accountant or for the accountant of your firm to understand the financials, because उनके जो rules थे वो different थे and we have followed something else. So that's why IFRS आया. It's an accounting standard जो internationally issue करा गया है by the International Accounting Standard Board. So the benefit is जब सारी कंट्री सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी तो इट्स वेरी इजी टू डू इंटरनेशनल कंपैरिजन. नीड फॉर आईएफआरएस, अगर आप देखोगे कि हमें आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट क्या थी, द वन सिंपल आंसर टू दिस इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन के आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एलपीजी कितना चेंज आया है. वी हैव ऑल द फॉरेन ब्रांड्स इन इंडिया, all the foreign chains in India, McDonald's, we have Starbucks. So we have so much of, you know, international brands in India. In Delhi we see. So now to make that possible कि एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करे, सो उन चीजों के लिए वी नीडेड आईएफआरएस सो दैट इट्स इजी टू डू कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अगर डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस फॉलो होगी देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो इसलिए आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट हुई बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. See, now next topic is what are the benefits of IFRS. जब हमने अडॉप्ट करे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स तो इसका क्या बेनिफिट हुआ. नंबर वन इज बेनिफिट टू इकोनॉमी. हाउ बेनिफिट टू इकोनॉमी इज convergence will benefit the economy by increasing growth of its international business. जब हमारा इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो होगा तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी. Next is transparency and comparability. जब सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉमन स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली भी फॉलो होंगे और हम भी करेंगे इंडिया में, सो कंपैरिजन करना बहुत इजी है. एंड ट्रांसपेरेंसी है. ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. देन इट्स बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इजी है because they can understand your financial statements easily. आपको अगर आप IFRS फॉलो कर रहे हो तो आपको इतना सोचना ही नहीं है. You can directly go to the international market. So बहुत सारे benefits हैं which you can read later on. Next topic is capital and revenue items. So in the last class also हमने ये discuss करा था what is capital expenditure, what is revenue expenditure, what are capital receipts and what are revenue receipts. So एक quickly इसको भी हम revise कर लेते हैं. What is capital expenditure? So students, whenever money is spent on the purchase of any fixed assets for the use in business for a long period of time.
जब भी आप अपने बिजनेस में मनी को स्पेंड करते हो फिक्स्ड एसेट्स पर जिनका बिजनेस में लॉन्ग पीरियड का यूज है, आपने एक मशीनरी परचेज करी, आपने कार परचेज करी अपने बिजनेस के लिए, सो these all the tangible fixed assets are your capital expenditure. जब भी आप मनी स्पेंड करोगे किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए अपने बिजनेस में यूज के लिए, so that will be capital expenditure. Not only tangible fixed asset, हमारे capital expenditure also includes intangible fixed assets like goodwill, trademarks, patents, copyright. Then अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर डिबेंचर्स में, then also ये capital expenditure है. Next is cost of financing of fixed assets. For example, अगर आपने लोन लिया है एसेट परचेज करने के लिए तो आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो बेसिकली revenue expenditure is money spent on materials and services which are used by a business enterprise in carrying out normal business activities. So students, जो expenses हम अपने business में daily routine के करते हैं, जैसे rent पे करना, salary पे करना, से rent, rate, light, repairs, telephone, stationery, पोस्टेज, सो ये सारे जो भी हमारे डेली नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, सो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is that expenditure is not exactly an expenditure, is basically there are certain expenditure which are primarily revenue in nature but the benefit from which is not consumed in the year in which the expenditure is incurred. It means deferred revenue expenditure हमारे वो खर्चे होते हैं जिनका benefit हमें सिर्फ एक साल के लिए नहीं मिलता, जिसका बेनिफिट हमें फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड रिसीव होता है. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. आपने एड करी एंड आपको पता है कि एड्स का जो बेनिफिट होता है वो आपको सिर्फ 1 ईयर के लिए नहीं है. अगर आपने आज एडवर्टाइजमेंट करी अपने प्रोडक्ट की, आपको इसका बेनिफिट सब्सिक्वेंट 2, 3, 5 ईयर्स के लिए मिलेगा. सो डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही होता है. इसमें हमारा जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम फुल अमाउंट्स, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज एडवर्टाइजमेंट पर स्पेंड करे इन द करंट ईयर, सो आप उसको टोटल अभी के अभी नहीं रिकॉर्ड करोगे 1 लाख रुपीज, बिकॉज इसका बेनिफिट आपको मिलना है फॉर 2, 3, 5 ईयर्स. सो आप इसको डिवाइड कर लोगे अपने एक्सपेंस को एंड equal amounts, for example 10,000 year 1 में, 10,000 year 2 में, and subsequently आप इसको allocate करोगे, right? So next topic is receipts. अब हमने capital expenditure and revenue expenditure discuss कर लिया. So now let's discuss about the capital receipts and revenue receipts. So students, capital receipts. Receipts means income, right? So capital receipts are money or income received from the sale of an asset. Now, if I have sold my car, for example, so the money that I have received by selling my car is a capital receipts. जब भी हम किसी एसेट को सेल ऑफ करके जो भी हमें इनकम जनरेट होती है तो उसको हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं. रेवेन्यू रिसीट्स आर डेली नेचर. डेली नेचर रिसीट्स लाइक आपने गुड्स सेल करे, सो जो आपके डेली बेस की इनकम्स होंगी वो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी, एंड जो आपके डेली बेस के नहीं होंगे दैट विल बी योर कैपिटल रिसीट्स. We can switch to the definition. Capital receipts are contribution into the business by the proprietor, partner, or shareholder towards the capital of the firm, and also any sum received from debenture holder, any loans, and the proceed of sale of any fixed assets of a business enterprise.
And revenue receipts or income are the money received from firm's activity in the normal course of business. So normal course of business में जो money receive हुई, that is revenue receipt. And capital receipts are contribution into the business by the proprietor, partner or shareholder towards the capital of the firm. Students, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, it's mentioned here that कोई भी proceeds आपकी आती हैं from the sale of fixed assets, so these are your capital receipts. Right? So now I'm starting a new chapter. So students, basically this was all the important theory things for financial accounting. जो भी हमारे important theory के concepts थे, we have discussed it. So now I'm starting with the chapter number 8 of the book, which is preparation of final accounts. So ये हमारा first practical chapter है, which we are starting. That is final accounts. ये हम एक बार prepare कर चुके हैं in our 12th standard, 11th or 12th में we did the final accounts. So final accounts में हमें पता है we prepare the trading account, then we prepare the P&L account, and then we prepare the balance sheet. Since it's your BCom level, so आपका school level से थोड़ा सा higher level up होगा in terms of the adjustments, in terms of the transactions, in terms of the questions. So let's start with chapter number 8, that is preparation of final accounts. So students, what is final account? सबसे पहला क्वेश्चन है कि final account कहते किसे हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि what is final accounts, then you have to say that final accounts is trading account, P&L account, and balance sheet. Balance sheet is not an account, it's only a statement, but हम इसको final accounts ही बोलते हैं. Trading account बोलो या final P&L account and balance sheet. These three are our final accounts. Capital expenditure we have discussed, revenue expenditure we have discussed, deferred revenue expenditure also we have discussed. So let's do one illustration. Let's discuss one illustration. So it's a very interesting illustration. इसमें हमें classify करना है about whether it's a capital expenditure or a revenue expenditure. So let's discuss the illustration one. Rupees 5,000 spent towards additions to the machinery. आपने एक मशीनरी परचेज करी है. नाउ उसमें आपने 5,000 स्पेंड करे हैं बिकॉज प्रोबेबली आपने इसमें कुछ एडिशंस करे हैं अपनी मशीनरी में. सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं विच वी डू व्हेनेवर वी परचेज अ फिक्स्ड एसेट्स, या अगर कोई एडिशंस होते हैं देन आल्सो. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डेली नेचर एक्सपेंडिचर. सो हमने कोई एडिशन करा है हमारे मशीनरी में, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज हमारी मशीनरी से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी. सो जब भी कोई मशीनरी कोई एसेट में एडिशंस हैं उसमें अगर हम फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन में हमने 5,000 रुपीज स्पेंड करे या उसका एक न्यू पार्ट और ऐड करा, सो दैट विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर. Next is repairs for 1,000 necessitated by negligence. Repairs for 1,000 necessitated by negligence. So students, ये daily nature के expenses हैं. आपने repair करवाया 1,000 rupees का. So is it a capital expenditure or revenue? So I think it will be a revenue expenditure, right? क्यों होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बिकॉज इससे कोई आपका एसेट इंप्रूव नहीं हो रहा, आप ये डेली नेचर के आपके नॉर्मल रूटीन के रिपेयर्स हैं, तो दैट विल बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेट्स क्विकली रन थ्रू द रिमेनिंग वंस. रुपीज 500 spent to worn out part and replace it with the new one. कोई आप एक पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो, अगेन डेली नेचर एक्सपेंस, रेवेन्यू. 1,000 wages paid, again revenue.
10,000 wages paid in, oh, sorry, this will be the capital expenditure because यहाँ पर wages नहीं है. These wages are in connection with the erection of a new machinery. So जब भी हम एक कोई asset purchase करेंगे उसमें कोई additions होते हैं या उसमें कोई भी installation charge होगा तो हम उसको capitalize ही करेंगे. By capitalize means कि हम उसको अपने cost का part बनाएंगे. So the remaining ones will be the homework. आप इसको प्रिपेयर करना, आप इसको रिवाइज करना एंड अंडरस्टैंड करना द रिमेनिंग ones. Then illustration 2 is also same. 3 again same. We have done the capital and revenue receipts. Done. This is done. Now let's understand the बेसिक थ्योरी ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सो अभी तक का जो भी इसके अंदर टॉपिक्स थे हम पढ़ चुके हैं अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट. अगर इफ यू रिमेंबर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आता था, ट्राई टू रिमेंबर. ओपनिंग स्टॉक, देन वी हैव purchases, and the credit side we have sales, and then we write the closing stock. And in the debit side of trading account, we mention about the if we have paid any wages, if there are any direct expenses in the form of carriage inward, right? So trading account is prepared to know whether the firm has made gross profit or suffered gross loss. So trading account banate kyun hai? Because trading account se we come to know about the gross profit or the gross loss, and P&L account tells us about the net profit and net loss. And third final account, that is balance sheet, this tells us about the position statement of the firm. It tells us about the assets and liability of the firm. So trading account is prepared to know whether the firm has made gross profit or suffered gross loss. So students, gross profit क्या होता है? Gross profit is excess of sales revenue over the cost of goods sold. So जब हम कंपनी की जो भी सेल्स हैं उसमें से कंपनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देते हैं, then we get is gross profit. Right? So trading account is prepared before the preparation of P&L because हम क्यों पहले बनाते हैं P&L से? Because it tells us about the gross profit. जो भी trading activities का result था उनके बारे में we come to know. Direct expenses on goods. So हम trading account में direct expenses show करते हैं. कौन से? For example, अगर कोई freight है, if there is any carriage inward, students, carriage inward ही हमारा direct है. Carriage outward will be shown in the P&L account. Then if there is transit insurance, there is packing and forwarding expenses by vendor. If there is any excise duty, then also it's a direct expense. Then a trader who import goods. So direct expense also includes loading charges, export duty, if any, packing and forwarding charges. So that was all about the trading account. So now let's discuss about the, so student, these are the journal entries. Trading account में on the debit side, we show opening stock, then we show the purchases, if there are any sales return, if there are any wages, if there's any factory rent, because trading account में trading activity से related expenses आएंगे. आपने अगर कोई factory rent दिया, then also it will come in the trading account. Carriage inward, whereas in the credit side of the trading account, we have sales, we have purchases return, we have closing stock. The students, you can see the pro forma of trading account. This is the credit side and this is debit side. If credit side is more, then we have the gross profit in the debit side. If debit side is more, then we have gross loss on the credit side, right?
And why we prepare trading account? To know about the gross profit and the gross loss. Then we have one illustration which is homework, because it's a very simple illustration. Only thing that you have to do in this is आपको classify करना है कि what are the direct expenses, कौन से direct expenses हैं जो हमारे trading account में आएंगे, right? So now let's discuss about the P&L account. So जब हमारा once we have prepared the trading account, हमने trading account prepare कर लिया है. So from the trading account, we come to know about the gross profit or gross loss of the firm. Now next step क्या है? Trading के बाद we prepare the P&L account. And why we prepare the P&L account? हम P&L इसलिए बनाते हैं to know about the net profit और net loss of the business. So जितने भी हमारे indirect expenses होते हैं, indirect business expense से administrative expenses है, maintenance है, depreciation है, selling and distribution expenses है, financial and miscellaneous expenses है. So all these indirect expense comes under the P&L account. So basically students, what we do, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हम ट्रेडिंग में शो करेंगे, एंड जितने भी हमारे बैलेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कहाँ आएंगे? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. So difference, what is the difference between the gross profit or the net profit, or we can say trading and P&L account में क्या difference है? So basically students, जो हमारा P&L से profit आता है जिसको हम net profit कहते हैं, उसको हम true profit भी कहते हैं, because that net profit is calculated after charging all the expenses. आपके जितने भी indirect expenses थे, जितने भी indirect incomes थी, आपने सारी record करी है, and जो आपके firm का net profit आया, that is your true profit. Why it is true profit? Because in P&L account we show all the expenses, all the indirect expenses, and all the indirect incomes, right? So now students, you can see the pro forma of the profit and loss account also. So in the debit side we have all the, so while preparing the P&L account, first we'll transfer the balance. अगर हमारा trading में gross profit है या gross loss है, we'll transfer it to the P&L account. After transferring the gross profit or gross loss, on the debit side, all the indirect expenses. See students, you can see rent, lighting, office salary, journal expenses, printing, stationery, and so on. All these indirect expenses are shown. And on the credit side, we have the indirect incomes. For example, if we have received any cash discount, if there is any commission, if there's bank interest received, investment, rent received, all these things are recorded on the credit side, right? So students, I think that's all for today from my end. In the next class, we'll continue more with the chapter number 8. We'll do more of the final accounts. So that's all for today's session. And now the last 10 minutes will be for your doubts and queries. If there's any topic that you want me to repeat, आप चाहते हो मैं कोई चीज आपको दोबारा समझाऊं, किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है, so you can post it in the live Q&A section, right? Students, you can buy the old books. So far, there is no change in the syllabus. You can refer to the 2019-2018 edition of the book. The book that I'm referring is Basic of Financial Accounting by J.R. Monga. Students, there is no WhatsApp group prepared set up for the SOL classes. Students के लिए as such कोई specific WhatsApp group नहीं है as of now. So जो भी आपकी queries हैं, whatever questions you have, you can post it in the last 10 minutes of the class, and I'll try my best to answer it. And students, one more thing, please don't send personal messages
on the team app because जो भी आपकी queries है, I'm going to answer in the class only. If you send me personal messages, so it will be difficult for me to answer everybody. So I think two classes are going on subsequently. So up to you, whichever class you want to join. I will share the PDF students in the next class definitely. Yes, you can refer to the SL study material. Yes, students, you can get these notes. I will try my best to give you the notes of the first two classes to in the next class definitely. Students, you can get these notes um, by opening a link that I will share in the next class. So basically, a Microsoft iCloud Drive where I will upload these files and I will share the link in the class. Then you can open that link and download the files in your desktop or on your phone or on the laptop. You can do that. डोंट वरी अभी हमने सिर्फ अपने लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अभी एक क्विक रिकैप हो रहा है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड डोंट वरी सब्सिक्वेंटली जो भी नोट्स होंगे आई विल शेयर डोंट वरी अबाउट द नोट्स okay so going concern assumption I'm repeating again going concern assumption says that whenever we do a business जब भी हम कोई business करते हैं तो हम एक assumption लेकर चलते हैं कि हम अपना business एक start कर रहे हैं new business so हम एक assumption लेके चलते हैं जिसको हम going concern assumption कहते हैं जिसका meaning है that we are not planning to shut down our business in say 10 years or more than 20 years तो हमारा कोई भी plan नहीं है to shut down a business. Going concern assumption says that our business will continue for an indefinite time period and हम अपने business को for example students आप basic सोचो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है वो कभी भी सोचता है कि मैं बस अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बस 2 साल में इसको शट डाउन कर देगा नेवर कभी भी ऐसी assumption नहीं होती ना so every business follows the going concern assumption जिसमें हम सोच कर चलते हैं that जो हमारा बिजनेस है वो एक indefinite पीरियड के लिए चलेगा और हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम उसे शट डाउन करें और क्लोज करें so this is a assumption अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको करना पड़ रहा है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग बट जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक बेसिक अजम्पशन जो माइंड में होती है दैट इज गोइंग कंसर्न जब हम आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस शैल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स यस यू कैन आल्सो मेक नोट्स आपको जैसे भी इजी लगता है यू कैन please buy the book because book is important since it's a practical paper so book is important for the practice because class may we will only discuss one or two examples one or two important illustrations so buy the book if you want to study from the book तो आप वहां से पढ़ सकते हो if you want to make your own notes तो आप वो भी कर सकते हो up to you सो स्टूडेंट्स बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जेआ मोंगा में जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसके सारे चैप्टर्स ही आएंगे एक्सेप्ट द पार्ट बी उसमें एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला सेक्शन है सो दैट इज जो हमें नहीं करना सो उसको छोड़कर सारे टॉपिक्स ऑल द चैप्टर्स विल कम okay materiality principle so students materiality principle क्या होता है I'm repeating this materiality principle is that in our financial transactions we have to disclose we have to record the material items students material items को हम significant items भी कह सकते हैं इसको key items भी कह सकते हैं इसको important items भी कह सकते हैं अब स्टूडेंट्स मटेरियलिटी होती है इंपॉर्टेंट आइटम्स फॉर एग्जांपल my business is trading and manufacturing of school bags right
मेरा बिजनेस है, ट्रेड करती हूँ मैं, बिजनेस फॉर स्कूल बैग्स में मैन्युफैक्चर करती हूँ, स्कूल बैग्स में, राइट नाउ। एक 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 हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो मटेरियलिटी डिपेंड, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिपेंड करती है कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो किसी और बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल, shutting down of schools and colleges, or say uh, going online of schools and colleges, जैसे अभी के टाइम में ड्यू टू दिस पैंडेमिक अब हमारे जितने भी क्लासेस हैं दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। सो दिस इज अ मटेरियल आइटम फॉर मी। मेरा स्कूल बैग्स का बिजनेस है, आई डोंट हैव एनी सेल बिकॉज जो मेरा बिजनेस है दैट हैज बीन शट डाउन बिकॉज nobody is buying school bags now. This COVID thing or shutting down of schools and colleges is material item for me because ये मेरे लिए important है, because इसके थ्रू मेरा business नहीं चल रहा, right, मेरी sales नहीं हो रही। So मैं आपको सिर्फ अभी मटेरियल का मीनिंग समझा रही हूँ कि मटेरियल का क्या मतलब होता है। इट मीन्स इम्पोर्टेंट आइटम्स, इट मीन्स सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। अब मेरे बिजनेस के लिए शटिंग ऑफ स्कूल्स इज मटेरियल, मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है। बट फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है से ग्रोसरी का, सो आपके लिए शटिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस डज नॉट मैटर, राइट। आपका ग्रोसरी का बिजनेस है, आपके लिए स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो जाए नो मैटर, जिन्होंने ग्रोसरी लेनी है वो लेनी है बिकॉज एवरीबडी हैज टू बाय द बेसिक नेसेसिटीज। सो मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो भी मटेरियल आइटम्स हैं, मींस सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं आपके बिजनेस के लिए, वो आपको डिस्क्लोज करनी है अपने फाइनेंशियल्स में, राइट। और जो मटीरियलिटी है वो डिपेंड करती है आपके बिजनेस टू बिजनेस, किसी के लिए वो चीज सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए नहीं है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। So I hope it's clear. Any other doubt that you have? I will share the notes in the next class definitely. I can't create the WhatsApp group because it will be very difficult because the strength is so much and it will be a tough task to, have everybody's number in a create a WhatsApp group. I've already published the book that you have to refer is J.R. Munga, Basic of Financial Accounting. So students basically अभी in the last two, for example आज की क्लास में and मैंने previous class में I've started with the introduction. So chapter number 1 to chapter number 7 में जितनी भी theory थी ना accounting की, I have discussed it, important ones, and I have started with the chapter number 8, which is your first practical chapter of this book is preparation of final accounts, जो हम एक बार 11th ग्रेड में कर भी चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। We will continue with this chapter in the next class. Definition of accounting. So it's very easy. Accounting is identification of financial transaction. Then we record, then we classify, then we summarize, and then we analyze and interpret the results to the users is accounting. So, students syllabus when you buy this book, so book में starting में ही ये syllabus आपको given है। IFRS is International Financial Reporting Standard. Need for IFRS you want me to repeat? So basically students ये International Financial Reporting Standard है, internationally follow होता है। So due to globalization अब जब भी international transactions countries करती हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू इंटरनेशनल बिजनेस, हम किसी भी फॉरेन चेन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, कोई भी न्यू सेटअप कर रहे हैं, सो स्टूडेंट्स अब तो इट्स वेरी इजी, लाइक आप देखोगे इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी फॉरेन ब्रांड वी हैव स्टारबक्स, वी हैव किया, वी हैव एमजी, ऑल दीज फॉरेन ब्रांड्स वी हैव नाउ इन इंडिया। सो ये अगर वो इंडिया में आए हैं बिजनेस करने के लिए, तो दिस स्टार्ट्स विद दिस
checking the financial statements of both the companies. अगर वो इंडिया आ रहे हैं तो इंडियन कंपनी के साथ अगर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो एक दूसरे के फाइनेंशियल्स चेक करेंगे. सो इंटर IFRS का पर्पस ये है कि वो इंटरनेशनली क्लेम्ड है, इंटरनेशनली फॉलो होता है. तो अगर कंट्रीज IFRS ही फॉलो करेंगी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया डू IFRS, US also do IFRS, it's very easy to do international business. दोनों के फाइनेंशियल सेम गाइडलाइंस पर बने हैं. अंडरस्टैंड करना, उनको एनालाइज करना, उनको कंपेयर करना, इट विल बी वेरी इजी. सो IFRS इसीलिए ही आया, सो दैट एक सेम सेट स्टैंडर्ड हो इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, सो दैट ऑल द कंट्रीज फॉलो दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. ओके स्टूडेंट्स, बाय नेक्स्ट क्लास मैं और ट्राई करूंगी कि मैं बाइलिंगुअल ही रहूं, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश, एंड आई विल स्ट्रेस मोर ऑन हिंदी ऑल्सो सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आए. कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स, जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं टू परचेज एन एसेट, टू एक्वायर एन एसेट. आपने मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए, आपने बिल्डिंग दी बिजनेस के लिए, आपने एसेट परचेज करा. तो जब भी कोई एसेट परचेज करोगे जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. I will give you in the next class deferred revenue expenditure. I will also search more examples, but advertisement expenditure is very easy to understand the concept of deferred revenue expenditure. So I think students, I have answered most of your queries. So whatever is left will continue in the next class, and timing will be same, 9:30 to 10:30 will be the class for financial accounting, and don't miss it. And all the best. Have a nice day, and we will continue with this. We'll continue with the chapter number 8, that is preparation of final accounts, in the next class. Thank you so much for your time and for attending the class. Have a good day. Thank you so much. And don't worry about the notes. I will definitely share it in the next class. Thank you so much.